So this was a very interesting email that I got. And it comes from someone who's pursuing his engineering and computer science, but is fascinated by marketing and entrepreneurship. And recently, this individual got an opportunity to work in a edtech startup as an intern. The agreement was the internship will be in marketing. And it just so happened that the first week, all that he was asked to do was make sales calls, make cold calls, send cold emails out. And after 2 weeks, he got a call from the individual who hired him and saying, you know what, I'm not impressed by your performance, so I'm going to assign a manager to you. The manager came in and instantly started threatening this individual कि अगर तुम काम सही से नहीं करोगे तो you will get fired and so on and so forth. And the next day the workload just completely doubled. और हर रोज वो workload बढ़ता गया. कभी भी कोई भी appreciation नहीं आया, कभी भी कोई भी feedback नहीं मिला. And it just so happened that they got on a call one fine day. The manager, the one who had hired, and this individual who wrote to me and said, you're fired and we're ending your contract right now. This is someone who's a student, and it's unfortunate that he had to go through this experience. So the question that he asked was, should I do something like sending him an email or being clear about where I was wrong and where I was right? Is this how corporate culture actually is? Is this incident common? I am completely lost. I feel sorry for this student. I feel sorry for him, because here's what you need to know. And this is for everyone who's been through the same thing. Internships are very tricky. Internships are tricky क्योंकि लोगों को पहले तो ऐसा लगता है, लोगों को नहीं, कंपनियों को ऐसा लगता है कि जब वो इंटर्न्स रखते हैं तो वो इंटर्न्स को खरीद लेते हैं. सबसे पहले तो बहुत सारे इंटर्न्स को कोई स्टाइपेंड मिलती भी नहीं है, which generally in my world is completely unethical. But I also realize life's practicalities, बहुत बार ऐसा होता है कि इंटर्नशिप स्टाइपेंड के स्टार्ट नहीं आती है, that's fine. But the second and the more important thing is, ये कंपनीज इंटर्न्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उनकी कोई औकात ही नहीं है. वो हायर एंड फायर करते हैं, उनसे घटिया काम कराते हैं, उनसे बिल्कुल डोंकी वर्क, no intelligence added. And this is most, I'm not talking about everyone, but most of the internships that I've seen is just really poor experience. And what they don't realize as an organization is student ka pura concept of corporate life is getting shaped up by this experience. उनके लिए ये पहली बार है कि वो एक कॉर्पोरेट सेटअप में किसी के साथ काम कर रहे हैं. वो एक ऑफिस में पहुंच रहे हैं और वहां अपना दिन बिता रहे हैं. वो एक टीम में काम कर रहे हैं. And everything that they will experience during this internship will in some way define how they think about corporate life. Is that common? Or is that something that should be treated as a one-off experience? I don't know that answer. I don't know that answer because I'd like to believe it's not common. I'd like to believe कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने इंटर्न्स को ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे. कम से कम इतनी बेरहमी से तो नहीं, जहां किसी को हायर किया, उनको थपथपाया, बोला कि तुम स्टड हो और तुम बहुत कुछ कर लोगे, एंड देन इवेंचुअली यू फाइंड आउट, एंड इवेंचुअली भी नहीं, 2 हफ्ते के अंदर यू फाइंड आउट कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, एंड देन यू फायर देम. इट्स पॉसिबल कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू स्पेंड टाइम इन ग्रूमिंग टैलेंट, यू स्पेंड टाइम इन नर्चरिंग देम, यू स्पेंड टाइम इन गिविंग देम फीडबैक. और अगर आपके पास वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, तो इंटर्न मत लीजिए ना, मत करिए. फिर ये आपको कौन ये हक देता है कि आप किसी का 2 हफ्ते का पीरियड जाया करके उसको बिल्कुल शिटी महसूस कराएंगे, उसको ऐसा महसूस कराएंगे कि उस बेचारे के पास कोई और उपाय नहीं रहेगा बल्कि एक रैंडम स्ट्रेंजर को ईमेल करके ये पूछना कि क्या ये कॉमन है और क्या मैंने कुछ गलत किया है. So my first suggestion, when something like this happens, I know that the natural default is to blame yourself. Don't. That also doesn't mean that you blame someone else. You remain in the middle. ना ये मेरी गलती है, ना मैं उन पे ये गलती थोपने वाला हूं. जो होना था वो हो गया. And once you do that, you then reflect. You reflect not to again blame someone, not
to find what was wrong, but to genuinely ask yourself, what is this experience trying to tell me? And जब आप उस चीज पे फोकस करके वक्त बिताएंगे, आपको वो बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो शायद जब आप गुस्सा थे, उदास थे, निराश थे, तब आपको नहीं दिख रही थी. And that is what will help you. You first let go of whatever has happened. Don't blame yourself. Don't blame someone else. And then ask yourself this question. What is this experience trying to tell me? अगर आप इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखे नहीं, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल तो ये एक्सपीरियंस आप फिर से एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए ही नहीं. आपने अपने आप को कोई भी येस एंड नो चेकलिस्ट वाला कुछ भी टूल दिया ही नहीं. आपने अपने आप से सिर्फ ये बोला, जो होना था हो गया, आगे बढ़िए. लेकिन अगर आप आगे बढ़ गए और पीछे मुड़ के ये नहीं पूछा कि मैंने इस चीज से सीखा क्या है, तो आगे जाकर शायद आप वही चीज फिर से एक्सपीरियंस करेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लेट गो, बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज दिस एक्सपीरियंस ट्राइंग टू टेल मी? Once you do that, you will know how to face any rejection in life. जिस दिन आप में ये क्षमता आ गई कि आप किसी भी सिचुएशन पे रिफ्लेक्ट करके अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि ये सिचुएशन मुझे मेरे बारे में क्या ऐसा बता रही है जो शायद मुझे नहीं पता है, you will have the ability to win over any situation.